The spontaneous protest that had Delhi under siege has finally prompted some definitive action. 5 fast-track courts to try rape cases will start functioning from the first week of January next year. On Sunday, the Delhi High Court had issued directions to the additional sessions judge to have daily hearings in cases of sexual assault. Even the 3-member committee of eminent jurists set up by Home Minister Sushil Kumar Shinde to review the country's rape laws has started its work. एजिटेटर से, स्टूडेंट एजिटेटर से उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्द से जल्द मैं अपॉइंटमेंट करूंगा कमेटी। तो कल रात में ही सिग्नेचर की है इस पर और इशू भी किया है एज ऑर्डर। जस्टिस वर्मा जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके अंडर एक कमेटी स्थापित की है। In an attempt to meet the overwhelming demand for quick justice, the government has also come up with certain preventive measures to stop violence against women. The Delhi police says it will file a charge sheet on the brutal rape of the 23-year-old paramedical student in a week. Further, it was decided to make it mandatory for all buses and commercial vehicles to keep their lights on at night. Across-the-board ban on tinted glasses, impounding of vehicles driven by unverified drivers, make it mandatory for vehicles to have drivers' photo and details along with helpline numbers, and pull out cops from non-core assignments and deploy them for night patrol. Delhi's Lieutenant Governor Tejinder Khanna, who had to rush back to the national capital after cutting short his US vacation, held out a clear warning to the police while informing the media of action against heavy-handed cops. 2 ऑफिसर जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, एसीपी के लेवल के एसीपी ट्रैफिक है मोहन सिंह डाबस और एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पीसीआर वैन यादराम, इन दोनों को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंशन के मैंने ऑर्डर्स किए हैं। और इनके जो 2 सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, डीसीपी ट्रैफिक प्रेमनाथ और डीसीपी पीसीआर सतबीर कटारा, इन दोनों के एक्सप्लेनेशन सीपी साहब कॉल कर रहे हैं मेरे आदेश पे, और उनकी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद ये मैं तय करूंगा कि उनके भी खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई किस तरह से करनी मुनासिब हो। But the people still on the streets are clearly not content with action against some cops. Why have neither politicians nor babus been held accountable? Why are Delhi Chief Minister Sheila Dikshit, Commissioner of Police Neeraj Kumar and Home Minister Sushil Kumar Shinde still clinging on to their posts? And why has nothing been done to eradicate police apathy in handling rape cases? The opposition remains unrelenting, ready to knock at the President's door for a special session of Parliament. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो सब कुछ अस्वीकार कर दिया। कल हम राष्ट्रपति जी से समय मांग रहे हैं और उनके पास हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर के ये मांग करेगा कि वो संसद का विशेष सत्र बुलवाएं और वहाँ कानून को कठोर बनाने का एक संशोधन सरकार लेकर आए। जनाक्रोश को आप दमन से नहीं दबा सकते, पुलिस की लाठियों और डंडों से नहीं दबा सकते, और ये जनाक्रोश एक दिन में नहीं पनपा है और ये एक घटना के लिए भी नहीं है। Belated action in tackling the menace of sexual offences may seem like a breakthrough of sort for the protesters, but there is anger on the streets because of government's clampdown and the barbaric suppression. It seems that there is a clear indication that a new method is sought to make politicians and bureaucrats accountable. Himanshi Mata with Bureau Inputs, News X.